Good morning. Am I audible to you? Can you see the slides? So let us begin. I think I have given you this problem yesterday just to practice it yourself. So if you have tried it, then let me show you the solution of this. And this is a case where you must have to use a dummy activity, right? Without a single dummy activity, it's not possible because D is following A and B both. And A and B both are starting from the same node. So it's not possible. You cannot have two parallel lines between the same nodes. So you have to use a dummy activity. So that's why this is the solution. You can see here. And you can compare with your solution if you have tried it. So activities A and B both start at the same event and need to end at the same event, since D depends on both of them. The dummy activity is introduced to ensure unique numbering, means that is the requirement of network construction. You cannot have two activities connecting the same nodes. So that's why you can see that is a dummy activity, and A is finished at node 2, and there is a dummy activity. And dummy activity means it does not have any time. For all other activities, you can see the times are mentioned. Right. So this is the solution for that particular problem. Right. So today I have planned that we'll take few more time, few more minutes on different types of problems where you can see how to construct the network diagram. So this one is the solution. Now let me give you the next solution. Of course, I'll share the slides with you, but if possible, you just note down the kind of things we are covering. And keep ready your pen paper so that you can have some practice exercise. So next problem I am giving. We have not solved it yet. The solution, the problem will be solved later on. First, let me give you an idea that how to construct the network. For example, this is another case where you can see the activities A to H, their derivations and their predecessors are given. So take a couple of minutes just to start a rough draft of this problem. All of you, I don't know how many of you are in the class now, 25. Okay, fair enough. So you can try that if this is a problem, how you can proceed. So A and B does not have any predecessor. So you can start from node 1, that is the start node, and the two arrows A and B, right? C, again, this is a situation. C should follow A and B. See, if this is a case, you have no other way. You have to use a dummy, right? Similar to the previous case, you have to use a dummy so that C can start from a node in which both A and B are finished. You cannot dot through parallel lines. तो आप क्या कर सकते हो कि A के बाद एक नोड लगा के फिर वहां से एक डमी एक्टिविटी खींच सकते हो जहां पे आप B को खत्म कर रहे हो. तो उससे क्या होगा कि उस नोड से जब आप C एक्टिविटी ड्रॉ करोगे तो इट विल सेटिस्फाई द कंडीशन कि C A और B खत्म होने के बाद ही स्टार्ट हो सकता है. देन D मस्ट फॉलो B, राइट? तो B नोड जहां खत्म हुआ है वहां से आप B एक्टिविटीज जिस नोड में खत्म हुआ है वहां से आप D को स्टार्ट कर सकते हो. Then there is another thing here, E and F both are following activities C. So just check how you can do it. Just give a try, all of you.
If anyone has completed it, just let me know. You have done it, okay? Okay, very good. So, who is speaking? What's your name? Oh, Ron. Okay, so how many dummy activities you have used total? 2. That's right. That is just checking. So 2 dummy activities you will need in this particular example. So let me share the solution with all of you so that you can compare with your result and you can. Okay, so this is the nicely drawn network diagram. No need to write these comments and all that. Simple activity and the time estimate near it. You can sequentially number the nodes like 1, 2, 3, 4 in an ascending order. That's it. And you see all the conditions that are given in that precedence table are now satisfied. Right? A, B does not have any predecessor. C is following activity A and B. So that is what is happening. because आप देख सकते हैं नोड 2 में आपका एक्टिविटी A और एक्टिविटी B through a dummy activity is merging. मतलब C is following A and B. The rest of the things you can check. D is following B. Yes, it is happening. B is a successor of D. Yes, it is happening. And both E and F are following activity C. So at node 4, it is happening. Similarly, you need another dummy activity because it is such that H is following D, right? H is following D and F. H is following D and F. So to make that happen, you have to connect one dummy activity from this node 5 to 6. Then you can say yes, H is following D and F. Okay. And G is only following D. That's why आपको यहाँ डमी की जरूरत पड़ा. Otherwise आप हो सकता है दोनों नोड को सेम कर देते. तो अगर वो करते आप 5 और 6 नोड को मर्ज कर देते तो ये जो कंडीशन है कि G should follow only D वो वायलेट हो जाता. उस केस में D and F दोनों को फॉलो कर जाता G. That's why. So checking each and every condition you have to fulfill it. As I said yesterday, you need some bit of practice to master this, and maybe in the first go you may not draw the right network. You have to iterate. Maybe you have to relocate these nodes and arrows such that it will look like a nicely drawn network. Otherwise there will be crisscrossing. Suppose ये जो node 6 है, ये node 6 को आप एक्टिविटी E के उस तरफ रखते सपोज, तो हो सकता है आपको लगता है कि कोई क्रिस क्रॉस हो रहा है, डमी एक्टिविटी E की लाइन को क्रॉस करना पड़ रहा है. तो यू हैव टू फाइंड अ वे आउट कि हाँ इसको इस तरफ ले आएंगे तो कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा. सो थिंग्स लाइक दैट. So as you are doing these things manually, there is no other way. Of course, there are complicated algorithms are there to construct it, but for the kind of requirement we are having, using or learning that algorithm itself will be more complicated rather than just doing the kind of things we are doing here. Of course, it is a large project and there are hundreds of activities. Maybe it's not possible to draw it manually. You may have to use some software, or that software is being run at the back end with some algorithms. So this is the solution for the second problem. Okay. Now let us have some computation. So by now you have understood, if this table is given, some table like this is given, then you may try and you may draw the network diagram, right? Then what next? What next? Today I'm going to discuss about that, and listen to me carefully, and this is very important, this computation part. So after constructing this network,
We have some calculations to be made to identify certain things in this network. As I said yesterday, there is some method called critical path method, or the CPM. So after constructing this network, we have to identify the critical path, right? The first job is to do some calculation, and that is divided into, of course, two steps. That is called the forward pass and the backward pass computation. Let me see whether I have to use this slide or I have another slide for explaining that computation. Just a second. So I will explain the forward pass and backward pass computation after constructing a network diagram, right? So step by step I will explain. I think I have to open another file for this. Just give me a minute. I will come back to this slide later on. First, I will begin with a very simple problem where we will understand how to do this forward and backward pass computations. Just a minute. Am I audible to you? Yes, sir. Okay, very good. So thankfully we are connected, because in the morning I faced some problems in the internet. It is very difficult for me to explain all these things. So just cooperate with me. And if you have any questions, please raise it there itself. Okay, now we are going to understand what is this forward and backward pass computation after the construction of the network diagram, so that we can identify the critical path, right, as well as certain other things also. So this is a problem I'm showing you. I have not shared it. I'm sorry. Yes. Can you see the slide? Calculations for the critical path method. Yes. Okay. So look at this simple network diagram, right? So you can easily identify what are the things here. There are two dummy activities you can mark here, D1 and D2, and no time is mentioned because dummy does not consume any time. So activity A, which takes 3 days or 3 minutes or 3 hours, some time unit. B is also 3, C is 4 units, D is 6, right? So you can see this is a very simple network diagram you have constructed based on the table that is given to you. Now what next? How to do the calculations for the critical path and other things like floats, etc. Okay, so first of all, we are going to do the forward pass computation, right? Forward pass. So for the forward pass computation, what we have to do, near each of these nodes, means these circles, we have to prepare a block, right? Let me show you in the next slide. I think. Yes. Now you can see we have placed 2 blocks near each of these nodes. जहाँ जहाँ भी nodes है, उसके पास हम ऐसे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना के उसको पार्टीशन कर दिए, ठीक है? दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। ओके, पार्टीशन करने के बाद जो फर्स्ट ब्लॉक है, जो थोड़ा सा अभी ग्रे कलर में शेडेड है, राइट, इन द फॉरवर्ड पास we are going to fill those blocks. Listen to me very carefully, right? We are going to fill these shaded blocks which are in gray color, that is the first block out of the 2 in the forward pass. तो जो हम forward pass calculation करेंगे उसमें वो सब blocks हम भरेंगे, ठीक है? We have to move from left to the right. Start node से लेके हमको last node तक, जो node number 10 सॉरी नंबरिंग गलत है, ठीक है? जो लास्ट नोड है वहां तक हमको इसको फिल करना पड़ेगा, ठीक है? जब वो फिल हो जाएगा, देन विल मूव बैकवर्ड फ्रॉम दैट लास्ट नोड टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड विल रीच द नोड नंबर 1, फर्स्ट नोड, एंड दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन, ठीक है? व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग in this forward or backward pass computation, let me tell you. So what you are mentioning here in the block are 2 things, right?
the first block which is headed here is marked by the earliest start time of that activity, right? Earliest start time, right? And the second block, that is the white in color, that will fill in the backward pass represents the latest start time, latest, right? So the first block is for earliest, the second block is for latest. So when you are moving in the forward pass computation, you are filling all the earliest start times, and when you are moving back, you are filling all the latest start times. Is it clear, right? तो आपका प्रोसेस क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे ब्लॉक बना देंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो आपके नोड 1 है, नोड 1 का जो फर्स्ट ब्लॉक है जिसको आप ग्रे कलर किए हो यहाँ पे, that will start with 0. That is by default. Means you are assuming that with a time frame of a kind of reference 0, you are starting your activities or projects. तो एक कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर लो, वो रेफरेंस टाइम आपको 0 ही लेना होगा. सो इन ऑल द केसेस यू कैन सी, जैसे इस स्लाइड में आप देख सकते हो, फॉरवर्ड पाथ या फॉरवर्ड पास या फॉरवर्ड पाथ कैलकुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑन आर्क नेटवर्क डायग्राम. तो आप देख सकते हो जो नोड 1 है, नोड 1 का जो फर्स्ट फिगर है जो कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, उसको बाय डिफॉल्ट हमेशा 0 लिया जाता है, तो हमेशा 0 ही होगा. ठीक है, so you mark it 0. Then when you move towards the right, that is the forward pass direction, आप नेक्स्ट नोड में आइएगा. ठीक है, नेक्स्ट नोड में आपका वैसे ही 2 ब्लॉक है. अब आप नेक्स्ट नोड के जो फर्स्ट ब्लॉक है, राइट, फर्स्ट ब्लॉक है, अब उसको फिल करोगे. तो उसका फिल करने का तरीका है कि द रूल इज दैट, लिसन टू मी केयरफुली, उस नोड में, जिस नोड में आप ये फिल करने जा रहे हो, उस नोड में आप चेक करोगे कि कितने एरोज मीट कर रहा है. ठीक है, कितने एरोज मीट कर रहा है. अगर एक ही एरो मीट कर रहा है तो आपका काम बहुत सिंपल हो गया. आप क्या करोगे, उसके प्रीवियस नोड का जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, जो कि इस केस में 0 है, उसमें उस एक्टिविटी का एक ही एरो है, तो उस एक्टिविटी का जो टाइम एस्टिमेट है, जैसे इस केस में d = 3 लिखा है, एक्टिविटी ए का ड्यूरेशन 3 है, तो उस 3 को सिंपली ऐड कर दोगे. तो वहां पे आप ऊपर देख सकते हो छोटा सा लिखा हुआ है ES plus D. ES is early start plus D is that duration is the early finish. ठीक है, तो ES plus D मतलब 0 plus 3, तो बस इसको 3 कर दो. तो इसका फर्स्ट डिजिट जो सेकंड नोड में, जो सेकंड नोड का जो फर्स्ट ब्लॉक है, तो दैट इज 3 बिकॉज प्रीवियस वाला था 0 and duration is added 3. So this is very simple. You can move like this, right? जैसे आप नोड 5 में आ जाइए. नोड 5, यहाँ पे 5 लिखा है जिस नोड के अंदर, उस 5 में आप देखिए that is एक ही एरो, there is only one arrow is coming to that node. तो इसके प्रीवियस नोड का क्या था, अर्ली स्टार्ट. अभी वो उसका मीनिंग हो गया अर्ली स्टार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी बी. अब विथ रेफरेंस टू एक्टिविटी ए वो हो गया था अर्ली फिनिश. अब बी के कंटेक्स्ट में वो हो गया अर्ली स्टार्ट. तो दैट इज 3 इन दिस केस. तो 3 + 3 6. ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं? Anyone, can you respond? Are you able to understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो वैसे आप आगे बढ़ सकते हो. जैसे आप अभी, हाँ, प्रॉब्लम आपको कहाँ पे होगा? प्रॉब्लम आपको वहाँ पे होगा जहाँ पे you have more than one arrow meeting at the node, right? Because you will have different options. तो जैसे आप नोड 9 पे आइए, जिस नोड में 9 लिखा हुआ है, ठीक है, उस नोड पे आप आइए. उस नोड पे आप देख सकते हैं there are 3 arrows are meeting. Out of that 2 are dummies, but they are arrows. So you have to check all the 3 options. ठीक है, तो इसके नीचे आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन लिखा है. 6 + 0. Why 0? Because the duration of activity, dummy activity is always 0. 6 कहाँ से आया? 6 आया नोड 5 के जो अर्ली स्टार्ट टाइम,
तो 6 ही था, तो 6 + 0 एक ऑप्शन हो गया। और जो इधर से आ रहा है एक्टिविटी सी के थ्रू जो आ रहा है वो हो गया आपका 3 + 4, नहीं, क्योंकि जो नोड 3 में आपका ये स्टार्ट टाइम 3 कैलकुलेट किया हुआ था पहले, सो 3 + 4 दैट इज 7, और देयर इज अनदर ऑप्शन दैट थ्रू एक्टिविटी D2 दैट इज डमी 2, ये हो गया आपका 9 + 0, 9 + 0 बिकॉज D2 का ड्यूरेशन 0, so 9 + 0 is 9. So you have to make a selection here out of 6, 7 and 9. There are 3 arrows. तो जहाँ पे ऐसे मल्टीपल arrows मीट कर रहा है तो वहाँ पे आपका सिंपल आपके जो रूल्स जो है अकॉर्डिंग टू द फॉरवर्ड पास एल्गोरिथम, यू हैव टू टेक रिमेंबर द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये आप नोट भी कर सकते हो अगर आपके पास कॉपी होती है बुक्स। यू हैव टू टेक द मैक्सिमम वैल्यू in the alternative case when you are doing the forward path calculation या forward pass calculation, ठीक है। तो इसलिए आप देख सकते हो कि नोड 9 में जो फर्स्ट फिगर है that is marked as 9 because 9 is the highest value. Then जो लास्ट नोड है वहाँ पे सिंपल एक ही एरो है, तो 9 + 5 is 14, right? This 14 is now giving you a very important information. Right, this 14 is giving you a very important information, that is giving you the time, that is the minimum time required to complete this project, right? 14 is the minimum time required, be it days, weeks or months. 14 is the minimum time in which you can only complete the project, okay? So if you have reached this block, that is the last node's first block, that means you can say your forward pass calculation is complete, right? Clear? Now listen to me very carefully for another important information. Then what you will do, you have to do the backward pass calculation. For backward pass calculation आपका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो लास्ट ब्लॉक है नोड 11 जहाँ पे लिखा हुआ है, जो लास्ट ब्लॉक है उसका जो फर्स्ट ब्लॉक आपको 14 मिला है, तो जो नेक्स्ट ब्लॉक है जो व्हाइट कलर वाला ब्लॉक है उसको बाय डिफॉल्ट आप 14 लिखोगे। इज इट क्लियर? वो दोनों सेम रहेगा, ठीक है। ये 14 है तो जो नेक्स्ट फिगर वो भी 14 ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स योर ईयरली फिनिश एंड द लेटेस्ट फिनिश आर यू आर मेकिंग सेम, राइट? वो कभी अलग नहीं हो सकता। तो ये 14 आया है तो उसको भी आप 14 ही लिखोगे, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे आप 14 लिख दोगे देन यू हैव टू मूव बैकवर्ड्स, राइट, फॉर बैकवर्ड पास कैलकुलेशन। तो बैकवर्ड पास कैलकुलेशन में भी सेम रूल है जैसे आपका फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन में हुआ था, जहाँ पे भी आपका एक ही एरो है, जैसे कम टू नोड 9, इसमें एक ही एरो इमर्ज किया है, राइट, ओनली वन एरो इज कमिंग आउट ऑफ दैट। तो उस केस में आपका कोई कंपैरिजन का चांस नहीं है, देयर इज ओनली वन ऑप्शन। वो क्या है, जो आपके सेकंड फिगर जो 14 आप किए हो बाय डिफॉल्ट, जिसको मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप एक्टिविटी ड्यूरेशन को खाली माइनस कर दो। सो 14 - 5, तो आप वहाँ पे 9 लिख दोगे, शायद नेक्स्ट फिगर होगा कुछ। यस, now look at this figure in the next slide. So इसमें बैकवर्ड कैलकुलेशन किया गया है, बैकवर्ड पास या पाथ कैलकुलेशन किया गया है, इसमें आप देख सकते हो। तो नोड 9 में आपका सेकंड फिगर भी 9 आ गया, क्योंकि 14 - 5 जहाँ पे एक ही एरो है वहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं। तो कंपैरिजन कहाँ पे आएगा? wherever you have more than one arrow। ये सिचुएशन किस नोड में है, कोई बता सकता है? मोर देन वन एरो बैकवर्ड पास में, in which node you are finding this situation? You know, very good. So in node 3 you can see you have some alternatives now, right? Because there are 3 arrows which are emerging from node 3, so you have to make a comparison. तो यहाँ पे आपका सिंपल रूल फिर से आप नोट कर लो या याद रख लो। ड्यूरिंग द बैकवर्ड पास you have to take the minimum value. In the forward pass, you have taken the maximum value whenever you have some alternatives, means more than one arrow. But in backward pass, we have to take the minimum value. Rest of the things are same.
rest of the things are same, no change. तो very simply you can proceed. जैसे आप देख सकते हो कि जैसे नोड 5 में आप क्या किए कि 9 माइनस 0, सो 9 क्लियर दिए सेकंड डिजिट, क्योंकि डॉमी का टाइम 0 है। अब जब बैकवर्ड पास कर रहे हो तो आप सेकंड डिजिट को यूज करोगे जो माइनस करने के टाइम में, है ना। फर्स्ट डिजिट फॉरवर्ड पास के लिए वो यूज हो चुका है। बैकवर्ड पास में जो सेकंड डिजिट है, जो अभी जिसको ग्रे किया गया है इस फिगर में, जिसको ग्रे किया गया है वो है सेकंड फिगर, एंड दैट इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग लेटेस्ट। द फर्स्ट फिगर इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग अर्लीस्ट, राइट। तो यहाँ पे आप कहीं पे देख सकते हो, जैसे नोड 9 के पीछे जो कैलकुलेशन है, नोड 9 देखिए, इसके नीचे जो कैलकुलेशन है उसमें LF लिखा है, LS लिखा है, दैट इज लेटेस्ट फिनिश्ड, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट यूज किया जाता है फॉर द सेकंड ब्लॉक, और फॉर द फर्स्ट ब्लॉक इट इज EF एंड ES, ठीक है। तो यू कैन व्हेनेवर देयर इज मोर देन वन एरो, जैसे मैंने कहा, तो नोड 3 में आपका कंपैरिजन करना पड़ा, तो यू गॉट द रिजल्ट्स लाइक 9 minus 3 that is 6, 9 minus 4 that is 5, 9 minus 6 that is 3. So out of this 9 6 5 9 sorry out of the 6 5 3 you have to take the minimum value, as I said, and the minimum value happens to be 3 in this case, तो आप वहाँ पे 3 लिखेंगे। And one of the very interesting thing you will find here, अगर आपका बैकवर्ड पास और फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन सब करेक्ट है, ठीक है, सब करेक्ट है, सो व्हाट विल हैपन, जो आपका फास्ट नोड है, फास्ट नोड का जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है, दैट इज ऑटोमेटिकली इट विल कम आउट टू बी 0, ठीक है। तो ये आपके लिए काइंड ऑफ क्रॉस चेक कैन हैपन कि अगर आप कहीं पे गलती किए हो इस कैलकुलेशन लॉजिक में या सिंपल अरिथमेटिक मिस्टेक्स हुआ है, तो जब आप यहाँ फर्स्ट नोड में पहुंचोगे तो आप देखोगे कि आपका लेटेस्ट टाइम जो सेकंड डिजिट है वो 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वो 0 हो ही जाएगा अगर आपका ये सब सही है। वंस यू हैव रीच्ड द फर्स्ट नोड, while moving back you can say that your backward pass computation is also complete. Your backward pass computation is now complete, right? You have moved from first to last node and then move back from last to first node, forward backward computation. Now what next, right? What does it means, these figures? How does these figures represent some values? I mean, want to interpret these things. So as you can see here, there is a bold line you can see in this figure, a very bold line, right? Darkened line. That line means their activities. Activity A is bolden, activity D is bolden, then this activity E is bolden, and this dummy activity D2 is also bolden little bit, although it is virtually present, but it has to be bolden. Why it is bolden? The reason is that, can you tell me why these lines are only bolden? Can you make some, identify some difference? No. We in fact follow all the paths during the forward path calculation. ये एक्टिविटी बी भी तो यूज किए थे हम, तो फॉरवर्ड पास कैसे किए? फॉरवर्ड पास में हम सारे पाथ यूज किए हैं, सारे एक्टिविटी को टच किए हैं, ठीक है सर। इस पाथ में इन टाइम एग्जिट टाइम सेम है। Yes. This identify, this kind of thing we should identify. See the peculiarity. ये जो एक्टिविटी 5 सॉरी जो नोड 5 है, इसका टाइम आप दोनों देखिए, एक 6 है एक 9 है, ठीक है। बाकी जितने भी नोड्स है जिसके थ्रू ये बोल्ड लाइन को ड्रॉ किया गया है, उसके जो टाइम, दोनों टाइम, अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश टाइम आप देखोगे, बोथ आर सेम, ठीक है। देखो फर्स्ट नोड का तो होता है 0 वो हमेशा 0 रहता है, और लास्ट नोड का भी जो भी वैल्यू रहेगा दोनों सेम रहता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, दैट इज ऑलवेज दे विल इक्वल। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके बीच में नेटवर्क में आपको देखना होगा कि ऐसे कुछ नोड्स है जहाँ पे दोनों वैल्यू मैच कर रहा है, ठीक है, जैसे नोड 3, नोड 7 और नोड 9। ये तो एक सिंपल एग्जांपल था, इसलिए
बहुत कम ऑप्शन है, तो ये बस 3 है। अदरवाइज जब थोड़ा और बड़ा नेटवर्क लेंगे उसमें आप और देख पाएंगे। तो जहाँ पे आपका ये दोनों टाइम सेम हो जाता है, दैट इंडिकेट्स यू डोंट हैव एनी टाइम टू रिलैक्सेशन, यू डोंट हैव एनी फ्रीडम ऑफ टाइम टू रिलैक्स, मीन्स यू कैन से देयर इज नो float, there is no float, right? Whereas in case of this 5 node 5, there is a gap between early start and latest start, right? तो इसी के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है कि you have to bolden this line, because this line is called the critical path. This is called the critical path, right? There is another very important thing I must tell you at this point, कि क्रिटिकल पाथ हम कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है? क्रिटिकल पाथ डिसाइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि यू कैन चेक जो पाथ, सी देयर आर 3 पॉसिबल पाथ्स इन दिस नेटवर्क, 3 पॉसिबल पाथ्स। क्या है वो सब? एक है ए बी D1 E, राइट? सेकंड इज ए सी ई, थर्ड इज ए डी D2 E, राइट? यही 3 पाथ है, और तो कोई पाथ नहीं बन सकता। तो आउट ऑफ ऑल दीज 3 पाथ्स, अगर एक सबका ड्यूरेशन आप ऐड करोगे, मतलब उस पाथ में जो जो एक्टिविटी है उनका ड्यूरेशन अगर ऐड करोगे, आप देखोगे उसमें यही एक ऐसा पाथ है दैट इज ए डी D2 एंड E, जिसका टोटल समेशन, टोटल टाइम का समेशन आपके जो एंड नोड में जो टाइम आप लिखे हो उसके साथ मैच कर रहा है, isn't it? Just check. See, you add the times which are along these bold paths, right? 3 plus 6 9, 9 plus 5 14, because D2 तो 0 है, so 9 plus 5 14, वो 14 मैच कर रहा है। बाकी कंपेयर कीजिए, जैसे A B D1 E में कितना हो रहा है? 3 plus 3 6, 6 plus 5 11, which is less than 14। दूसरा पाथ में क्या हो रहा है? 3 plus 4 7, 7 plus 5 12, जो कि less than 14 है। So the point is, critical path is that path, शायद मैं कल आपको बताया था, the path which takes the longest time and that in fact decides the project completion time। तो इस फिगर से तो आप बता रहे थे कि 14 days or 14 weeks is the project completion time, and that is definitely decided by this golden path, जो कि A, D, D2 and E, it consists of these activities, A, D, D2 and E. D2 is virtual dummy, so A, D and E are basically the critical paths which decides the project completion time, whereas B and C are non-critical path, because they are not lying on the critical path, they are non-critical paths। तो B और C activity अगर थोड़ा बहुत delay हो जाता है, थोड़ा बहुत, why I am saying थोड़ा बहुत, the reason is that there is a limit for which you are permitted to delay it। Beyond that, if you are delaying, that activity will also become a critical path, part of critical activity, ठीक है? तो in the present condition, जो फिगर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, उस केस में the critical path is the path which is deciding this project completion time, and that is the longest time, that is the longest path in terms of time, of course। So 3 plus 6 plus 5, that's why these activities are boldened, darkened, not the other activities. The rest 2 activities are not critical activities, okay? This is one thing. The second thing is that the critical, listen to me very carefully, I am giving a very important information. The critical activities always connect the nodes which are having 0 slacks. Slacks means the difference between the 2 values। जैसे मैंने कहा ना, जैसे 3 3 है नोड 3 में, और नोड 7 में आपका 9 9 है, और नोड 9 में आपका 9 9 है, means there is no difference, both are same, ठीक है? तो critical path will always connect the nodes which are having this kind of situations, means both values are equal। But remember, it is not always necessary that the critical activities, I mean non-critical activities, may also pass through these kind of situations। For example, look at activity C। एक्टिविटी सी का देखिए, एक्टिविटी सी ऐसे 2 नोड को कनेक्ट कर रहा है
जिसमें कोई स्लैक नहीं है, isn't it? सी के स्टार्टिंग नोड हो गया नोड 3 जिसमें भी 3 3 है, और नोड 9 जिसके भी 9 9 है, बट सी इज नॉट एन क्रिटिकल एक्टिविटी. That means all the critical activities always exist or remain between two nodes which are having no slacks. No slacks means the early start and latest start are same. Okay? But sometimes some non-critical activities maybe exist between such situations or such nodes which are having zero slack. So you should not make the mistake that all the activities which are connecting between the nodes with zero slacks are critical activities. You should not jump to that conclusion. Okay? Is that clear? Okay. So I hope I conveyed the message, and it is such a very important thing to understand about critical activity, critical path, non-critical activity, and all these things. So in the next class, I'll take up some bigger problem. The same thing will repeat again and again till all of you understand this computation and be sure that you can solve it yourself. Do you have any questions? Please go ahead. All right, so I'll stop here today.